और जैसे हो जाएगा आपके उसके बाद हमारे पास फिफ्थ है सैनिटाइजर अभी क्या 6 हो गए
ओरिएंटेशन है लॉग No. नहीं इसने बोला था फोटो वीडियो वगैरह सर के बोर्ड मेंबर कई बार आए हुए हैं मीटिंग पहले कई बार बोर्ड मीटिंग
एकदम से लॉन्चमेंट करते हैं तो वो हाफ ऑफ द हाफ ऑफ द स्वीट हाफ ऑफ द इनफॉर्म भी उनको पहले से बोलो अच्छा हाँ कि जोर से अपने बच्चे को ऑडियंस में कौन से क्लास है लाइन को लेके आ रहे हैं आनी है मैं पीएचडी टीम को कह रही हमने 11 o'clock जाना है हाँ ये भी नहीं पता चल मुझे सीमा हाँ हाँ बहुत सारी मैम है तो मुझे लग रहा है कहीं भी पर चला गया फिर मैंने सॉरी बाय मिस्टेक के पास तो है नहीं परसों को बाइक से कल मैं आया था मैं कल बाइक से आया सारे तो बोला रफ शीट पेपर चला के देख लें कौन से पेन चल रहे हैं नॉर्मल इंक पेन चल रहे हैं या स्केच पेन तो ये आप ग्रीन कलर में होगा जेल पेन है ना ये तो नॉर्मल मार्कर से भी मार्कर मेरे यहाँ का मैं लेती हूँ प्रदीप से मैंने भी मैसेज कर दिया एक का मैसेज किया बाकी दोनों का नाम कहाँ है दूसरा मिस्टर महाकाल कहाँ आगे वो पार्क कर रहे हैं दो के नंबर आएंगे ना I've got you with me, future of the country. वो करना
क्या प्राइस है? अब आ रहा है ना? ठीक है, अब देखते रहना। हाँ हाँ। लेकिन अभी आने वाला है। हाँ, एक बार ये अभी आने वाले होंगे ना, इसका शूट करके फिर वो कर देना, इनॉग्रेशन करके फिर। माइक अंदर आ रहे हैं। साइड में, इधर साइड में
साइड में दरवाजे के साथ There's a robust virus which keeps proliferating throughout humanity. That is arguably the most difficult to identify and eradicate, simply because it is indigenous by nature. It is the virus of the mind that leads its host to dishonestly abuse one's entrusted power to his or her own private gain. It is the mind virus of corruption. A very warm good morning to our honorable chief guests, respected members of jury, all the dignitaries, teachers, and my dear friends. Today we are here to observe UN Anti-Corruption Day in association with Transparency International India. To sensitize the audience on this current and ongoing world issue, that is corruption, we have invited students from various schools across Delhi for a lively debate,
street play, and on-the-spot painting competitions, which are being held in our school today to mark the day. As a part of our anti-corruption program, we had also organized slogan and essay writing competitions, which were held in different schools. Let us commence today's program with a ray of hope and positive energies. It's our honor to invite all the dignitaries to light the auspicious lamp. With the lighting of this lamp, may darkness be replaced by light, ignorance by knowledge, and corruption by honesty. निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा A heartfelt thanks to our esteemed guests for leading this auspicious beginning. With this luminous start, we now officially declare the event open and proceed with our planned schedule. May I now request our respected director, sir, to extend a warm and enthusiastic welcome to our honorable chief guests and other dignitaries. Good morning, all members of the country and respected dignitaries. On behalf of the management committee of the school, the teachers and the children of the school, thank you very much for gracing our occasion. Thanks a lot to all. Today's event, as has been already told, we are celebrating the UN Anti-Corruption Day, and Shri Subhash Chandra Agarwal ji has been very kind to accept our invitation to come and grace the occasion to address all of you about his achievements, and also along with him is Madam Madhu Agarwal, who is equally involved in all the activities with him. He cannot do without her, and vice versa, she cannot do without him. So this is a great team in a big hand, and on behalf of our school, a small planter which we gave to Agarwal sir. Subhash Chandra, he is like Subhash Chandra Bose, Chandra also wanted to have done this great man. We are very fortunate to have our old friends with us at this. Our former chief engineer of the services, defense, Shri Gandhi, great man, actually, who has been coming, who has been guiding for last many, decades, to grace this occasion to be here and to speak to all of you. Thank you, sir. Thank you very much for coming. God bless you. A big hand. We have got Shri Malhotra sir with us. I think that he has been coming. And despite little health issues and whatnot, what of them they are here to grace us. I think he became a great inspirational speaker and whatnot. Actually, he has been doing a great job and he has been coming to the school. Not only this, and he is a great donor also. He is a good philanthropist and he has been donating the amounts for the welfare of the children and the welfare of the school. We have also got with us
Shri Ram Jha, who is the main executive director of the Transparency International India. Thank you very much, Ramji, to come to Gujarat. First Mughal, not the last Mughal, the first Mughal of RTI activism. क्योंकि आप बात कर रहे हैं RTI activism के, I'm so privileged to have your talk. A 62-year-old manufacturer of linen from Chandni Chowk, Subhash Chandra Agarwal has been consistently spearheading a crusade against corruption and the irregularities in the judicial and bureaucratic system. RTI को मैं अपना धर्म समझता हूँ और व्यापार मेरा कर्म है, जो बिना रोजी रोटी के तो कुछ हो नहीं सकता। बड़ी मामूली सी घटना है, मेरे को लेटर्स टू एडिटर के लिए प्रेरित किया, जो कि अल्टीमेटली मेरे को मेरी वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंचा गया। मेरा ये सफर शुरू हुआ 1967 में, जब मैं दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज में टेक्निकल करता था पुराने दिल्ली में। उसका सेकेंड ईयर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, और उन दिनों सिंगल डोर डीटीसी बसें चलती थी। उसमें कंडक्टर पीछे गेट पर खड़ा हो जाता था, और आम ट्रेडिशन क्या था, खास तौर पर स्टूडेंट्स में, कि वो 50-50 करते थे। 10 पैसे दिए और उतर जाओ बिना टिकट लिए। 10 पैसे सबने बचाया, 10 पैसे कंडक्टर की ट्रांसफर हुई, नुकसान हुआ डीटीसी का। मैं मान रोड से लाल किला आ रहा था, 20 पैसे का टिकट होता था, मैंने 20 पैसे कंडक्टर को दिए, नीचे उतर। मैंने 50-50 नहीं किया, मैंने तो पूरे पैसे भी नहीं, मैंने वो टिकट दे। तो नीचे उतरते वो बताता हूँ कैसा होता है टिकट। मैं नीचे उतरा, उसने 5 पैसे के टिकट के कई टुकड़े करके मेरे पीछे फेंक दिया और कहते कि अपने टिकट को शायद लगा देता। अब इतना गुस्सा आया, पैसे पूरे दिए, एक बेईमान से गालियां सुनी और पब्लिक अथॉरिटी का नुकसान हुआ। तो डको बहुत था मैं उन दिनों, सहन नहीं कर पाया इतना ज्यादती। तो उन दिनों दिल्ली में हिंदी का हिंदुस्तान निकलता था, या हिंदुस्तान टाइम्स का हिंदी के आज भी निकलता है। तो उसमें एक नया कॉलम शुरू हुआ था, संपादक जी हमारी दिल्ली में, जिसमें ग्रीवेंसेस पब्लिश होती थी। मैंने उसमें 5 पैसे के पोस्ट कार्ड पे सारी डिटेल्स लिख के डाल दी। जैसे वो पत्र पहुंचा वो सब पी गया। मैं कॉलेज गया तो वहां पर एक डीटीसी की वैन मेरे को ढूंढते हुआ, मेरे दोस्तों ने बताया तो मैं तो कोई डीटीसी की वैन वाले ढूंढ रहे, मैंने कहा आपसे अरेस्ट करने आ गए। मैं वहां से पिछले दरवाजे से कॉलेज छोड़ के भाग गया। जब अगले दिन मैं कॉलेज पहुंचा तो मेरे दोस्तों ने कहा भाई तुम तो यूं कॉलेज छोड़ के भाग गया, वो तो कंडक्टर से माफी मांगने लाए थे। मैंने कहा कि इतना इफेक्टिव है, तो मैंने पत्र लिखने शुरू कर दिए, और लिखने शुरू किए उस तरीके से कि जिससे सजेशन देता था, ग्रेडियंस नहीं लिखता था, क्योंकि ग्रेडियंस लिखता मैंने जब कंडक्टर की नौकरी आएगी भुगतेंगे उसके परिवार वाले। तो मैंने सजेशन उन पे निकाल दिया, और ऐसा सजेशन देता था कि जो व्यवहारिक जमाने में 4 आने और 8 आने जरूर 25 पैसे और 50 पैसे के जो डायमीटर डिफरेंस था वो बहुत ज्यादा था, और 50 पैसे और 1 रुपए का डायमीटर डिफरेंस बहुत कम था। और जो ये निकल कॉपर अलॉय के पॉइंट्स हैं, ये मिसयूज होते थे मेल्टिंग के लिए, क्योंकि इसकी जो मेटल वैल्यू थी वो फेस वैल्यू से ज्यादा हो जाती थी। तो मैंने सजेशन लिखा रिजर्व बैंक को, मैंने कहा जी कॉमन डायमीटर डिफरेंस करो, मेटल ऐसा लगाओ जो कि मेल्टिंग हो सके। फिर उनकी टीम आई, उन्होंने मेरे से डिस्कस किया, और आपको जानते ताज्जुब भी होगा और खुशी भी होगी कि स्टेनलेस स्टील के कॉइन्स थे 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के। ये एग्जैक्टली जो मैंने उन्हें डायमीटर साइज दिए थे और स्टेनलेस स्टील मेटल सजेस्ट किया था उसमें जारी हुई। तो एक बार मैंने पोल रिफॉर्म्स को लिखा, तो पोल रिफॉर्म्स के सजेशन मैंने ऐसे सारे राजनीतिक दलों को, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबको भेजे। तो उस समय उपराष्ट्रपति थे मोहम्मद इनायतुल्लाह साहब, उन्होंने मेरे को हैंड रिटन प्लेन पेपर पे चिट्ठी भेजी, लिफाफा भी सेल्फ एड्रेस था, टिकट भी वो शेर की मूर्ति वाला सरकारी नहीं था, और उसकी शुरुआत उन्होंने ऐसे करी
You think so seriously and sincerely in public interest that you are my personal friend and I will not use official machinery in communicating with you. मेरे लिए तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से ज्यादा ये what is a beautiful byproduct of all such services which I receive from so many people. मैंने petitions का अंबार लगा दिया। अब उसमें मेरी मेन petition जो थी Jewish week related के वो मेरी सबसे ज्यादा highlighted petition वो थी World Declaration of Justice। ये है तो ultimate अब लोग आप कहते हैं कि आपको डर नहीं लगता आपके हमले का। देखिए मैं आपको जो नहीं बोलूंगा मेरे को किसी पब्लिक अथॉरिटी ने परेशान नहीं किया। सिर्फ द मोस्ट करप्ट पब्लिक अथॉरिटीज होती हैं उनकी तरफ से जरूर दो तीन इस तरीके की हरकत हुई है। आगे एक्शन जो है वो राइट टू इंफॉर्मेशन एंड नॉट टू एक्शन। तो मैंने उसे राइट टू एक्शन किया उसे मीडिया से शेयर करके गवर्नमेंट को फोर्स करता हूँ कि वो उन इरेगुलरिटीज को दूर करे। पहले एक पार्ट टाइम पैशन था जो कि अब फुल टाइम एक्टिविज्म में कन्वर्ट हो गया है। रोज मेरे को कमीशन की हेयरिंग में जाना पड़ता है, सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होते हैं। गवर्नमेंट अपने ऑफिसर्स को आरटीआई को हैंडल करने के लिए ट्रेनिंग के लिए मेरे को बाहर भेजती रहती है। इनसे मतलब एनकरेजमेंट मिलता है। तो ये छोटी सी कहानी very inspiring, the data and really nice. We get a lot of inspiration from you, sir. And our children also who are here with us, they have learned a lot from here. And I must say here, not only sir, who is in the college beneath Buttercock, but also Madam Madhu Madam, give a big hand to her. She is also helping and she is also helping. Sir, which has not come here actually the day in which I had morning. He is a man who can sacrifice anything for the sake of the country, for the sake of his duty, active RTI member that is doing. Sacrifice everything what we have in crores and crores of rupees, which has letters here and there to fight for the corruption. Thank you very much, sir, really for being here. Thank you very much for coming and greeting all of you. My friend Ryan sir, I have already spoken. We were together in Shillong long time back, say 30 years back or 35 years back, in early 90s. And I noticed his personality at that point of time. I was the PMC of the mess, officers of mess, and then we used to get work done from the engineers. Sir is a renowned engineer, town planner, whatnot. Actually, he had all the qualities in him. Then at that point of time, I was really very happy to know about Sir's character. No corruption. No corruption. It was in the services, in the defense, it was known. The MES people are working, the engineers who are working there, they are tendency to have some money, have the favors. So that is my Ryan friend. Actually, give a big hand. Welcome again. God bless. Dr. Nodra sir, actually, he has been a great friend of ours, grand bishop of the school, Finance Lopez. He was in the corporate world, he was in teaching, he was used to guide the people, big trainer, corporate world trainer, renowned figure.
And he was very kind to be with us, to guide our children to be with us in the school. No, sir, actually very inspiring speaker. He used to address the children. I mean, how to behave and how to do it. This is being serves there, and he's very kind enough to be with us in the morning. Thank you very much, sir. Very, very kind to welcome. I will take 2 minutes only, and just take, I know a lot of activities are to be done. Our society, as you know, we are working under the aegis of Servants of the People's Society, founded by Lala Lajpat Rai in 1921. Mahatma Gandhi was the person actually who inaugurated that point of time. His mission was at that point of time, milk for infants, food for adults, education for all. He is the person who started, and we adopted the policy of education for all in 1986, and not many things which our society does it. A great philanthropist. He actually started with this one, and we are all the beneficiaries, and we are also trying to be a active member of the society. The Transparency International India is offshoot, this is all there in headquarters, and that's for Bhavan. Transparency International India also came into existence during 95-96. Earlier, no doubt, the people from Germany had come and again this thought, given the Transparency International India should have it, we should have a chapter. We had in 1996-97. At that point of time, the first president of the Transparency was Kuldeep Nayyar, journalist. And then later on, in the middle of the Hani took over, Shri S.T. Sharma ji was a great Gandhian. Actually, he was also assisting and he was also doing it. And our Vice Chancellor, he has been Vice Chairman for the last many years also of the Transparency International India. And it came to the form part of it with the ONGC's help, assistance. Shubhi Raha, long time back, in Bangalore in a meeting, he came out, he said, well, he will support the Transparency International India. He will look after financially and he will do it. And then ONGC helped us a lot. Likewise, many projects started to fight out the corruption. Integrity Pact, Development Pact, legal help, many things over there in the Transparency International India is doing it. And one small aspect, our school is doing it with the guidance of Transparency in India. We conduct the debates, the slogans, writing, painting, whatnot, to see the children are educated to fight for corruption. We take the pledge. We have been doing for the last 15 years in the schools. Many schools have been coming. This time of schools is less. Actually, again, maybe because of Saturday holiday and whatnot. But at the same time, I must say, it's good people came. I extend hearty welcome to the people from the other schools. Thank you very much. Give me a hand, the people who are from the outside. Thanks a lot. I'm not being a little objective here. I will ask Madam Vandana to start the proceedings of the day. Thank you very much once again. God bless. Thank you. Before we start with the program today, I, on behalf of the entire family of Parvantri Mehta Vidya Bhavan, students and staff of this family, extend a hearty welcome to our director, Sir Prof. Captain Bari. He is the source of inspiration behind everything, and it won't be an exaggeration to say that Parvantri Mehta Vidya Bhavan Naguri Devi Shakti Memorial Academy is equal to Bari sir. They are synonymous. And sir, at this age of also, at 83, he travels daily from Pitampura. And with every breath, I think, we all take oxygen inside and sir breathes the institution inside. So this is what we have, in dedicated here, and we are just trying to take on the legacy forward. So sir, a hearty welcome to you on this auspicious occasion of UN Anti-Corruption Day. I request my students to continue with the program now. Thank you, sir and ma'am.
भ्रष्टाचार की पहली महामारी है। हर एक को रिश्वत लेने या देने की बीमारी है। कब होगा भारत भ्रष्टाचार मुक्त? समय आ गया है। समय आ गया है जब हम सब हो जाएं एकजुट। अब तो ऐसे भारत का निर्माण होगा। अब तो ऐसे भारत का निर्माण होगा जिसमें भ्रष्टाचार का ना नामो निशान होगा, जिसमें भ्रष्टाचार का ना नामो निशान होगा। आप सभी जानते हैं कि किसी भी कार्य का आरंभ ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करके किया जाता है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज हम इस कार्यक्रम का आरंभ प्रार्थना से करते हैं। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके, भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके, दूसरों से भूल हो तो माफ कर सके, दूसरों से भूल हो तो माफ कर सके, झूठ से बचे रहे, सच का दम भरे, झूठ से बचे रहे, सच का दम भरे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। इतना कर्म कर, मुश्किलें पड़े तो हम पर, इतना कर्म ले तो धर्म पर, साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म पर, खुद पे हौसला रहे, कभी से ना डरे, खुद पे हौसला रहे, कभी से ना डरे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। Before we begin human anti-corruption debate, let me apprise the participants of the rules of the debate. Each speaker is allowed to speak for 3 minutes and will get additional 30 seconds for summing up. Participants must strictly adhere to the time limit. Participants should not announce the name of their school. The first bell will ring after 3 minutes. The second bell will ring after 30 seconds. The decision of the judges will be final. वाद विवाद प्रतियोगिता के नियम इस प्रकार हैं। सभी प्रतिभागियों को 3 मिनट का समय दिया जाएगा तथा समापन के लिए 30 सेकंड का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। समय सीमा का पालन करें। किसी भी प्रतिभागी को अपने विद्यालय का नाम घोषित करने की अनुमति नहीं है। पहली घंटी 3 मिनट के बाद बजेगी, दूसरी घंटी पहली घंटी के 30 सेकंड के बाद बजेगी। निर्णायक मंडल का फैसला अंतिम होगा। Today's topic for debate is
Corruption is a manifestation of the failure of core values in the society. We will start this debate with Team 3 as they have to leave early. Pragya from Team 3 will express her views in favor of the topic and Shrishti will respond to her arguments. Good morning, everyone. My name is Pragya, and today I'm going to talk about why corruption should be banned in India. Hello, everyone. My name is Shrishti. Let's start the debate. In corrupt environment, the citizens lose their confidence in the country and in the rules. Corruption is a practice that serves negative consequences for organization and society at large. Corruption is a cause of system, so why should people suffer from it? Corruption is because of citizens of the country, they suffer because they are the part of it. Corruption helps people to do their work in a smarter way. Corruption do not support our moral values. Corruption leads dishonesty and dishumanity. Corruption do not have a link with our moral values. Corruption is a form that has an impact on everyone. It has link with our moral values. Corruption mainly understood as the abuse of untrusted power for personal benefit at the expense of others. Corruption do not support our moral values. For example, responsibility, accountability, fairness, and transparency. Corruption is a sword to slay our rivals. Corruption can be a sword, but it's a paper sword, which can help you at a point, but after a certain point, it will only harm you. Corruption is necessary for each rich or poor people. Corruption is not healthy for government or citizens. It's only beneficial for people who took bribe. Corruption is not disrespect of constitution, but is a smarter way to get work done. Corruption is disrespectful for our constitution because our constitution do not support corruption. Corruption is a condition of developing state, increase our development and industrialization also. Corruption in India is an issue which affects economy of central, state and local government agencies. With the help of this and by distributing money, you can become a member of parliament assembly, member of legislative assembly, and then you become a prime minister or chief minister also. With the help of corruption, you can get any job and post by giving bribe. A democratic country cannot be a democratic country until corruption exists. You can give pride and be a prime minister, but it's unfair for the people who work hard for the post. It helps those who are in power and stay in power. It has provided a faster route to get things done. It can provide a faster route to get what we want, but it's not good for us. It do not support our moral values. We should follow our moral values and we should follow our moral values. Crackdown on corruption will achieve nothing until these underlying problems are addressed first. Problems are everywhere in the world. Without corruption, also a country can run properly. For example, Denmark, New Zealand, Norway, and Singapore. They are the countries where corruption rate is really low. So I think India should also be one of a country where corruption rate is really low. Corruption is not healthy for country, either citizens. It's only healthy for the people who took bribes. Say no to corruption. Thank you. Thank you. It was great listening to them. आज की बात विभाग प्रतियोगिता का विषय है ईमानदारी के प्रोत्साहन से होगा भ्रष्टाचार का उन्मूलन। इसी के साथ मैं टीम संख्या 1 को माइक पर आमंत्रित करती हूँ। विषय के पक्ष में बोल रहे हैं संचित राणा, विषय के विपक्ष में बोल रहे हैं कृषक।
आदरणीय निर्णायक मंडल, यहाँ उपस्थित शिक्षकगण और मेरे प्रिय मित्रों, आज हम आप सबके समक्ष एक डिबेट प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसका ईमानदारी एक नैतिक मूल्य है। ईमानदार लोग भ्रष्टाचार नहीं करते। ईमानदारी से तात्पर्य सिर्फ नैतिक ईमानदारी से नहीं है, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक से भी है। भ्रष्टाचार नैतिक ईमानदारी से भी है। ईमानदारी को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। पहला, शिक्षा के माध्यम से हम बच्चों को नैतिकता, ईमानदारी और पारदर्शिता जैसे मूल्यों के बारे में सिखा सकते हैं। माता पिता एक उदाहरण। माता पिता अपने बच्चों के लिए एक आदर्श होते हैं। जब माता पिता स्वयं मूल्यों का पालन करेंगे तो बच्चे उसका अनुसरण करेंगे। तीसरा, सामाजिक अभियान। सामाजिक अभियानों के माध्यम से लोगों को हम इन मूल्यों के बारे में जागरूक कर सकते हैं। चौथा, कानूनी प्रावधान। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कड़े से कड़े कानूनी प्रावधान किए जा सकते हैं। इन उपायों के माध्यम से हम भ्रष्टाचार को नष्ट और ईमानदारी को प्रोत्साहन दे सकते हैं। भ्रष्टाचार तब होता है जब लोग अपने दायित्व से समझौता करके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए, एक सरकारी अधिकारी जब अपने कर्तव्यों का पालन न करके रिश्वत लेता है, वह नैतिकता का उल्लंघन करता है। एक व्यवसायी जो अपने ग्राहकों से धोखा करता है और अधिक लाभ कमाता है, वह ईमानदारी का उल्लंघन करता है। एक व्यक्ति जो चुनाव में धांधली करता है, वह पारदर्शिता का उल्लंघन करता है। तो आइए हम सभी ईमानदारी को बढ़ावा देने के लिए काम करें। जब हम सभी ईमानदार होंगे तो भ्रष्टाचार को कम करने में मदद मिलेगी। जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने के लिए ईमानदारी और सत्यनिष्ठा बहुत आवश्यक है। और अच्छी बात तो यह है कि दोनों ही गुण कोई भी व्यक्ति अपने अंदर विकसित कर सकता है। धन्यवाद। आदरणीय निर्णायक मंडल, यहाँ उपस्थित शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय मित्रों, तो आज मैं इस मंच से विषय के विपक्ष में अपना मत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। महोदय, भ्रष्टाचार केवल मूल मूल्यों की विफलता की अभिव्यक्ति नहीं है, इसमें कई अन्य चीजें भी शामिल है, जैसे गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता और आदि। महोदय, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या भ्रष्टाचार को मूल मूल्यों से मजबूत करने से खत्म किया जा सकता है? क्योंकि भ्रष्टाचार एक जटिल समस्या है, इसमें बहुत सी चीजें शामिल है, जैसे कानून का उल्लंघन करना। तो महोदय, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमारे पास बहुत सी अन्य चीजें हैं, जैसे लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक कर आंदोलन करना, जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं उनको कड़ी से कड़ी दंड देना। महोदय, आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि देश या शहर में गरीबी होती है, वहां पर लोग कुछ ज्यादा ही भ्रष्टाचार करते हैं, क्योंकि वहां के लोग भ्रष्टाचार में बहुत ही ज्यादा लिप्त होते हैं। महोदय, जिस देश में असमानता होती है, ऊंच नीच, अमीर गरीब, दलित ब्राह्मण, उन दोनों के बीच लड़ाइयाँ होती है, जिससे भ्रष्टाचार और असमानता बहुत तेजी से फैलता है। तो महोदय, मेरा सरकार से निवेदन है कि वो जल्द से जल्द गरीबी और असमानता दोनों खत्म कर दे। महोदय, इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि ईमानदारी भ्रष्टाचार को खत्म करने में एक महत्वपूर्ण स्थान निभाता है, लेकिन क्या सिर्फ ईमानदारी ही भ्रष्टाचार को खत्म कर सकता है? क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत जटिल समस्या है। तो महोदय, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमारे पास बहुत अन्य उपाय हैं, जैसे कि लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक कर आंदोलन करना, जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं उन्हें दंड देना, कठोर कानून लगाना। और महोदय, भ्रष्टाचार की तो जड़ ही गरीबी और असमानता है। तो महोदय, अगर सरकार गरीबी और असमानता को ही खत्म कर दे तो भ्रष्टाचार भी खत्म हो सकता है। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि वो जल्द से जल्द गरीबी और असमानता पर ध्यान दे, उसे खत्म करे। तो महोदय, कहना तो बहुत कुछ चाहूंगा, पर समय के अभाव के कारण अपनी वाणी को इन पंक्तियों के साथ विराम देता हूँ। जन जन की है एक ही पुकार, कि जन जन की है एक ही पुकार, जल्द से जल्द खत्म करो ये भ्रष्टाचार, कि जल्द से जल्द खत्म करो ये भ्रष्टाचार। धन्यवाद।
a great performance. The next team which is going to come to the stage is team 2. Shivanji Kumari of this team will make a case for the motion, and to oppose the case is Kumkum. Corruption. Corruption is the dark artist that paints the canvas of moral and ethical values. Corruption, corruption, corruption. What is corruption? The root cause of today's world and the failure of core values and the moral values. So, very good morning to our honorable judges and my fellow debaters. This is contender number 2, favoring the motion. Corruption is the manifestation of failure of core values in our society. Okay, so very first common question to all. Do you all think that corruption is any way it's better than humans' ethical and moral values? I know it's a very dumb question to ask because it's not. I know some of you might claim that there is deep necessity in government practices to get governance among complex systems. But don't you all think you all are at a dumb state favoring these tender topics like corruption? Because I am the one who will defame it as the fullest of all. Corruption. Seriously, it is the one topic who is lowering the ethical standards of society, putting trust issues between them, fostering the culture of dishonesty. Seriously, corruption? Corruption is a symptom of broader societal failures and lack of interest between them. Greediness of desire and money, lowering of political and market monopolization. Seriously, corruption? Corruption is a topic which is increasing day by day and putting the whole world at stake. Let me give an example, like Endor scandal, which was happened in the late century of 2000. What was there? The ethical standards were lowered and the business world was destroyed. Who was the reason? Yes, humans and the corruption. The topic is corruption, but we all are having corrupt people between us. Now what to mention more? Everyone is now convinced, as I think, that corruption is not a blessing, it's a blundering to humanity. At last, I just want to conclude by saying that make India the place where the mind is without fear and the head is held high, where the country is corruption free, united and the safest. Then and there we can call our country, our India, the best, united and the safest of all. And I still can proudly say that no corruption can erode my honesty. We humans will corrupt the corruption itself and honesty will be great. Thank you and have a nice day ahead. A very warm good morning to my fellow opponents and respected jury of the day. I am contestant number 2 stand before you to argue that corruption is indeed a manifestation of failure of the core values within our society. Corruption to a country's system is just like virus to computer system. A virus damages the whole working mechanism of a computer, and just like this, corruption also damages the whole working mechanism of a country and leads to failure. Corruption is a communicable disease whose symptoms can be seen throughout the world. Well, many of you may say that corruption is one of the 1,000 causes of a country's failure. But mark my words, I say corruption is the root cause of a country's failure, which leads to manifestation of failure of the core values in our society. There is erosion of honesty and trust as societal integrity wanes. Honesty. What is honesty? Honesty, a once celebrated virtue, is overshadowed, leading to rampant corruption. The emphasis on personal gains and economic aspiration has
paves the way for corruption and corrupt practices. A newly built school is mismanaged after a couple of weeks. A newly built hospital is mismanaged after a couple of weeks. Even though a newly built road is totally damaged after a couple of weeks. Why does it all happen? This all that happened because of the corrupt practices happening at that place. So, we all know that there was a bombarding in Hiroshima and Nagasaki. But, if Japan would be a corrupt country like India, would it be able to maintain the same standards as they maintain today? Of course not. Today, the Gen Z and the modern men has become too materialistic. Nobody really cares about corruption, empathy, integrity, honesty and all. Do we? Our education system is also lacking. Our education system has just become a running racetrack for grades on which everybody is running and nothing else. Now, our society would say that there are always civil war and world war going on. Even so, we can also see there are always some conflicts going on in our society. But why does these wars and conflicts happen? This happens because of the unequal distribution of the public resources, and this unequal distribution of public resources is because of corruption. Don't you think our country needs budget to fix this? Definitely the country needs, and the country spends too. But the money that is spent never reaches on their target sector because of corruption. Nobody really cares about it. But when some case comes up, everybody remembers corruption. Those who fight corruption should be clean themselves first. It is a cancer that eats at a citizen's faith in democracy, demonizes the instinct for innovation and creativity. So, me and you, everyone present here, let us promise ourselves not to be the part of this disease, because once a wise man said, the world will not be destroyed by those who do evils, but by those who watch them without saying anything. Thank you all for giving your ears. Such a powerful performance it was. Now the participants of Team 4 shall be on stage. Sandhya will put forward her views in favor of the topic and Tanishka will oppose her. The topic of today's debate is corruption is the manifestation of the failure of core values in the society. And I'm going to address the August gathering by speaking for the motion. Some fundamental values which were deeply ingrained in the system of our society have now degraded due to corruption. Thomas More's dream of a utopic world can never be fulfilled, and the dream of having a corruption-free state is nearly impossible. It has rightly depicted the world projected in Shakespeare's Macbeth's opening line, that is, fair is foul and foul is fair. Many of my friends sitting here must have got their SC, ST or OBC certificates made through fraud in order to get the benefits of the reservation policies. Core values let us live in a society like different cells in an organism, with harmony and cooperation only if corruption is absent. There are so many instances, such as in Japan, they have moral education class, Dokuto, which is compulsory in all schools, focusing on core ethical values. And even in countries like USA, which is considered to be a superpower under Dodd-Frank Act of 2010, records
whistleblowers with monetary benefits, thereby showing that ethical values are always appreciated. In Shakespeare's play, The Tempest, Caliban says to his master Prospero, "You have taught me language and I have learned how to abuse it." My dear friends, I would like to interpret this word abuse in a much wider perspective by highlighting corruption, which is the manifestation of the failure of core values in the society. It has deeply enshaped many souls, whether it's a high-ranking official or mere peons. I would like to ask my worthy opponent that why do they believe that corruption is a many-headed monster which has uprooted the core values of the Indian society. I would like to conclude my debate with very profound words. No corruption must become a gospel of truth. It should break up stones and roots. But to fight against corruption, we really need a strong youth. We really need a strong youth. With this, I raise my case. Vasudev Kutumbakam. Jayatu Bharatam. Honorable judges, teachers, and my dear friends. Today, I'm here to speak against the motion on the topic corruption is a manifestation of the failure of core values in the society. I don't understand. Why do we forget that there have been many personalities such as Lal Bahadur Shastri? He lived a life of integrity and didn't even have a single penny in his bank account when he died. Every person seems a thief to a thief, and that same thief makes other people believe that 99% of this population are cheats, burglars, etc. My worthy opponents say that corruption thrives on the greed of the rich. But Warren Buffett, who was ranked as the richest person in the world by Forbes, still lives in a 2-room flat and doesn't even carry a cell phone. Baba Amte and Mother Teresa are known to be the epitome of honesty and integrity. Moreover, why do we have to see the darker side of anything? I mean, there are many philanthropists and Samaritans who have outnumbered those who have forgotten that hard-earned is real earned. While corruption is undoubtedly detrimental, labeling it solely for the manifestation of failure of core values is not appropriate. I would like to ask my worthy opponent, why put all the governments? Also, some other issues like nepotism and red tapeism, which are not dealt with very strictly. Some countries like Singapore, Hong Kong, and Qatar come under the category of highly corrupt countries. Still, they are known as developed countries in the world. In the movie Rocketry, The Nabi Effect, Nabi Narayan was given a very lucrative offer by NASA about getting a good post, a settled life. But it was his patriotic feelings for his country that he refused the offer. In the movie Super 30, we find Anand Kumar was given load of extra money. But still, he taught those 30 kids they came from poor families, and later those 30 kids passed the prestigious JEE Mains exam with flying colors. Both of these examples show us that corruption is not in all the people and they still have moral values in them. At last, all I would like to say is, just remove the pessimistic goggles from your eyes and then you will realize that corruption is not solely responsible for the manifestation of failure of core values in the society. With this, I rest my case. अद्भुत प्रस्तुति। अगली टीम संख्या 5 के पहले प्रतिभागी हैं छाया श्रीवास्तव, जो पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे और विपक्ष में वैष्णवी सिंह। इन दोनों प्रतिभागियों के लिए जोरदार तालियां। आज के विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने
जा रही हूँ। अपने विचार प्रस्तुत करने से पहले मैं आप सभी को एक कहानी सुनाना चाहूंगी कि एक सेठ शहर में बड़े जमींदार से मिलने के लिए आए। उनका मकसद था गंगा एक बड़ा सौदा करना। ट्रेन से उतरकर उन्होंने रेलवे स्टेशन से जमींदार के घर तक के लिए एक टैक्सी करी। टैक्सी वाले ने उन्हें जमींदार के घर पहुंचा दिया। जब सेठ को जमींदार को पैसे देने थे तब उन्हें ब्रीफकेस मिला ही नहीं। सेठ के हक्के बक्के उड़ गए। तभी दरवाजे पे टैक्सी चालक ब्रीफकेस लेकर आया। तब सेठ की जान में जान आई। उन्होंने टैक्सी चालक से पूछा कि इसमें तो कई लाख रुपए थे, तुम्हारा मन तो नहीं डोला? टैक्सी चालक बोला, नहीं, बेईमानी का मौका तो सबको मिलता है, मैंने इसे नहीं लिया। अगर आज इसे ले लेता तो सारे टैक्सी वाले बदनाम हो जाते और ये नुकसान कहीं बड़ा हो सकता था। तो आपने देखा ईमानदार और ईमानदारी का महत्व, यह आपको भी अच्छा लगा होगा। तभी तो कहते हैं कि कोई भी प्रसिद्धि ईमानदारी जितनी समृद्ध नहीं होती। आखिर क्या है ईमानदारी? ईमानदारी एक ऐसा नैतिक मूल्य है जो सदैव समाज को सही रास्ते पर ले जाने का कार्य करता है। परंतु अगर इस ईमानदारी में भ्रष्टाचार का कीड़ा लग जाए तो वह समाज को शरे खोखला करने का कार्य करता है। अब बात हो रही है ईमानदारी से होगा भ्रष्टाचार का उन्मूलन, तो केवल बड़ी बड़ी बातें करने से बदलाव नहीं आता, बदलाव हमको भीतर से लाना पड़ेगा। मैं एक सामान्य सी बात कहती हूँ, हम रास्ते में जा रहे हैं और हमारे पास गाड़ी के कागज नहीं है। पुलिस वाला हमारा चालान काटना चाहता है, हम 200 रुपए देके छूटना चाहते हैं। क्या हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करेंगे? हम ट्रेन में जाते हैं, हमारे पास सीट नहीं है, टीटी को 500 रुपए देके हम सो के जाना चाहते हैं। क्या हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करेंगे? हमारे घर बिजली का मीटर तेज चलता है, हम तार फंसा के उसे धीरे करना चाहते हैं। क्या हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करेंगे? हाल ही में राजस्थान की हुई एक घटना के बारे में साझा करना चाहती हूँ कि राजस्थान में पुलिस ने यह अभियान चलाया कि जो व्यक्ति में सीट बेल्ट पहना हुआ मिला जाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। जब उन्होंने पहला व्यक्ति सीट बेल्ट पहना देखा तो खुशी से उसे 2000 रुपए इनाम दे दिए और उसने पूछा कि भाई तुम्हें 2000 रुपए का करोगे क्या? उसने कहा लाइसेंस बनवाऊंगा। ये है हमारी आजकल की सच्चाई। 1/125 करोड़ हिंदुस्तान आप हैं, 1/125 करोड़ हिंदुस्तान मैं हूँ। आप अपना भ्रष्टाचार समाप्त कीजिए, मैं अपना भ्रष्टाचार समाप्त करूंगी, तब जाके देश का भ्रष्टाचार कहीं समाप्त होगा। आज भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं, मानो समाप्त ही नहीं होती। भ्रष्टाचार की नींव तो उस दिन से रख दी जाती है जब माँ अपने बच्चे से कहती है कि बेटा जल्दी से काम कर लेगा तो तुझे बड़ी वाली चॉकलेट दिलाऊंगी। अनजाने में रोपा गया लालच का वो बीज बड़े होकर विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। भ्रष्टाचार की ये जड़ें हमारे समाज के हर वर्ग तक पहुंच रही हैं और हमें इसका जड़ से उन्मूलन करना होगा ताकि हमारा समाज उन्नति के रास्ते पर चल सके। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी कि शब्द हल्का नहीं भारी है, शब्द हल्का नहीं भारी है, किस्सा ये है कि किसमें कितनी ईमानदारी है। आओ दे ईमानदारी को प्रोत्साहन और इस प्रयास से करें भ्रष्टाचार का उन्मूलन, भ्रष्टाचार का उन्मूलन। धन्यवाद, आपका दिन शुभ है। ईमानदार वही है जिसे बेईमानी का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। नमस्कार, मैं वैष्णवी सिंह आज के इस वाद विवाद प्रतियोगिता में विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने की अनुमति चाहती हूँ। ईमानदारी एक महंगा शौक है जिसका वहन करना हर किसी के बस की बात नहीं। जब ये बात कही गई थी तो इसका प्राय चरित्र से था और आज मौद्रिक शर्तों से है। इस वाद विवाद को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं चाहती हूँ कि आप सब ये जानिए प्रोत्साहन का अर्थ क्या है। किसी भी व्यक्ति या समुदाय द्वारा कोई भी विशेष क्रिया करवाने हेतु अभिप्रेरणा रूप में दिए जाने वाले वाचन को प्रोत्साहन कहते हैं। अब यदि उदाहरण के तौर पे मैं शेर को कहूँ कि तुम मांसाहार छोड़ करके शाकाहारी बन जाओ तो क्या शेर मेरे से प्रोत्साहन लेकर के शाकाहारी हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यह उसका आचरण है और किसी भी जीव का आचरण सिर्फ वाद विवाद या फिर प्रोत्साहन से बदला नहीं जा सकता। हमें अन्य कदम उठाने की भी जरूरत पड़ेगी। भ्रष्टाचार पैसों से बढ़ के कहीं आगे है, हमारे व्यवहार में भी है, लेकिन मेरे ज्यादातर प्रतियोगियों ने केवल घूस यानी करप्शन का जिक्र करा। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि क्या सड़क पर मिले 100-200 के नोट को अपने पास आई लक्ष्मी कहकर रख लेना भ्रष्टाचार का उदाहरण नहीं हुआ?
विपक्ष दल ने बोला कि टिकट ना होने पर भी 500 रुपए देकर वो सो के जाना पसंद करेंगी। ये तो गलत बात है। मैं बिहार से हूँ और रोजाना बिहार से दिल्ली के बीच में औसतन 200 रेलगाड़ियां चलती हैं। इसके बाद भी यदि 2 महीने पूर्व कराए हुए टिकट की भी कोई गारंटी नहीं होती कि वे कंफर्म हो जाएगा, तो मैं क्यों ना 500 रुपए देकर के अपने सफर को आरामदेह बनाऊं। कहते हैं कि जिसके पास मनी है उसकी कुंडली में शनि का कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता। मेरे विपक्षी दलों ने कहा कि प्रोत्साहन के साथ साथ हमें अन्य कदम उठाने की भी जरूरत है। मैं ये नहीं कहती कि आप मेरी बात मानिए, आप स्वयं विचार करिए। यदि हमें अन्य कदम उठाने की जरूरत पड़ रही है तो ये तो मेरे पक्ष की बात हुई कि सिर्फ प्रोत्साहन से कार्य नहीं चलेगा, हमें और भी कदम उठाने पड़ेंगे। ईमानदारी या बेईमानी किसी भी व्यक्ति के आचरण का हिस्सा होता है और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जब किसी मनुष्य का ईमान बिक जाता है तो आप कुछ भी करके उसे वापस नहीं खरीद सकते। एक अफसर ने अपने निलंबन के बाद दिए गए साक्षात्कार में कहा, हद से ज्यादा ईमानदार हूं मैं, इसीलिए जमाने का गुनहगार हूं मैं। उनके अनुसार कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर रोक करके उन्होंने घूस लेने से अस्वीकार कर दिया, तो उल्टा उन्हें ही बेईमान सिद्ध करके उन्हें निलंबित कर दिया गया। अब ये मैं कहना चाहती हूँ कि यदि प्रोत्साहन मात्र से उन्मूलन हो पाता तो क्या ये अफसर अपने उच्च अधिकारियों को प्रोत्साहित करके अपना निलंबन नहीं रोक लेते। अब यहाँ बैठे बैठे कहने से कि आम खाने का मन है, आम का स्वाद आ जाए, तो ये तो चमत्कार की बात होगी। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि एक दौर था जब घुड़सवारी सब किया करते थे और 4 पहिया वाहन चलाना शौक की बात थी, और एक आज का वक्त है जब 4 पहिया वाहन चलाना काफी आम बात है। ठीक उसी तरह पहले के जमाने में ईमानदारी एक आम बात हुआ करती थी और बेईमानी शौक, और आज के जमाने में बेईमानी एक आम बात हो गई है और ईमानदारी शौक रखने वाले लोग ही करते हैं। धन्यवाद। मेरी निर्णायक मंडल और उपस्थित मुख्य अतिथियों से ये निवेदन है कि वाद विवाद काफी गहराई का विषय है और सिर्फ रटी रटाई चीजों पे हम इसका जो अंत है वो नहीं निकाल सकते। मेरे आए हुए अन्य प्रतियोगी ने काफी ऐसी बातें बोली जिसपे मेरे को उनको काउंटर करने का मन है, तो यदि आप सबकी अनुमति हो मैं बस कुछ क्षण और लेना चाहूंगी। यहाँ पे आकर के अंग्रेजी में कंटेस्टेंट नंबर 2 ने पक्ष से कहा, जिस भी रेफरेंस से कहा हो डम स्टेज, तो आई वुड लाइक टू से कि whenever you are on a stage and you are referring to the audience, you should never ever address dump to the stage. You should respect the stage because obviously when you are given a podium, you should respect that stage first of all. Second of it, कई लोगों ने कहा कि जापान हमसे काफी आगे है। 2 प्रतियोगियों ने ये बात कही। हाँ, जापान हमसे आगे है, पर जापान अंग्रेजों की कैद में नहीं रहे थे और उन्हें 200 साल बाद आजादी नहीं मिली थी। हमें आजादी और अपने आप को विकसित करने का मौका देश से मिला। भारतीय मैं इसलिए कह सकती हूँ कि हम जहाँ भी हैं गर्व से हैं और ईमानदारी से हैं और आगे भी बढ़ते रहेंगे। मौका थोड़ा कम मिला है, पर हाँ, एक दिन उनसे आगे जरूर बढ़ेंगे। धन्यवाद। अद्भुत। अब मैं टीम संख्या 6 को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। विषय के पक्ष में बोलने आ रही हैं गरिमा, विषय के विपक्ष में बोलने आ रही हैं समीक्षा। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं सबके सामने ईमानदारी के प्रोत्साहन से ही भ्रष्टाचार के उल्लंघन विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। भ्रष्टाचार का दीवाना बना हर दिन
खाता रिश्वतों का है यही अहम सिलसिला। न्याय की बातें होती है पर दिलों में गहरा कचरा। भ्रष्टाचार की वजह से हो रहा है समाज का बिगड़ा हाल। आम आदमी जागा, मांगता है सुधार, कहता है इस अनैतिकता पर करो हमारे साथ बात। सब मिलकर उठाए भ्रष्टाचार के खिलाफ स्वर, हो एक सशक्त समाज जहां हो ईमानदारी का इजहार। बेईमान व्यवहार, भ्रष्टाचार बेईमान व्यवहार का एक ऐसा रूप है जिसका प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है। यह तब होता है जब हम अपने लाभ के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। भ्रष्टाचार कई रूपों में आता है, जैसे रिश्वत लेना, देना, दोहरा व्यवहार और सरकार द्वारा धोखाधड़ी सब इसमें शामिल है। भ्रष्टाचार विश्वास को खत्म करता है, लोकतंत्र को कमजोर करता है, आर्थिक विकास में बाधित होता है और गरीबी तक को और बढ़ाता है। इसलिए हमें भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कठोर कानून बनाकर उन्हें उचित दंड देना होगा तथा हमें राजनीतिक हस्तक्षेपों को पूरी तरह समाप्त करना होगा। यह तभी मुमकिन होगा जब हम ईमानदारी को बढ़ावा देंगे, क्योंकि ईमानदारी के प्रोत्साहन से ही हम भ्रष्टाचार का सफल उन्मूलन कर सकते हैं। ईमानदारी ही व्यक्ति की उन्नति में मदद करती है और समाज में के सकारात्मक परिवर्तन लाती है। हमें व्यक्ति को ईमानदार रहने के लिए प्रेरित करना होगा। ईमानदारी के प्रोत्साहन से पहले हमें ईमानदारी के साथियों का चयन करना होगा। ईमानदारी ही समृद्धि का मार्ग है और समृद्धि भ्रष्टाचार से नहीं, ईमानदारी से होगी। भ्रष्टाचार हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रगति में एक बहुत बड़ी बाधा है। इसके उल्लंघन के लिए सभी संबंधित पक्षों को एक साथ काम करने की आवश्यकता है। व्यक्ति रिश्वत के मामले में ही पकड़ा जाता है और रिश्वत देकर ही छूट जाता है। यह एक ऐसी बीमारी है जो दीमक की तरह पूरे देश को खोखला कर रही है। मैं पूछती हूँ कि यह भ्रष्टाचार तब कहा जाता है जब सरहद पर जान देने वाले सैनिकों को हम चयन करते हैं, तब क्यों नहीं कोई भ्रष्ट सैनिक अपनी जान दे देता है। कैसी विडंबना है कि ईमानदार लोगों को ही शहीद होना पड़ता है। क्यों क्रिकेट मैच में होनहार खिलाड़ियों को चुना जाता है? क्योंकि वहां खेलने के लिए भ्रष्टाचार की नहीं, ईमानदारी की जरूरत होती है। सरकार ने डिजिटल लेन देन, ई प्रशासन, नोटबंदी और जीएसटी जैसे बड़े कदम उठाए हैं, पर इन सब कदमों को बढ़ाने की शुरुआत अवश्य हुई, परंतु समस्या के विधान के लिए सिर्फ सरकार ही उत्तरदायी नहीं है, बल्कि समाज का हर व्यक्ति उत्तरदायी है। राष्ट्रीय जन जागृति ही राज्य को भ्रष्टाचार जैसी कुरीतियों से मुक्त करा सकती है। जब हम अपने कर्तव्यों का ध्यान और निर्वाह ईमानदारी से करेंगे तथा भ्रष्टाचार जैसी किसी भी रूप में शामिल नहीं होंगे, तब हम गर्व से कह सकते हैं कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिला एक सहारा। सरस ताम्रस गर्भ विभा पर नाच रही शिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुकुम सारा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा। धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आप सबके समक्ष ईमानदारी के प्रोत्साहन से होगा भ्रष्टाचार का उन्मूलन के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। भ्रष्टाचार की बात न पूछो, चारा तक खा जाते हैं। भ्रष्टाचार की बात न पूछो, चारा तक खा जाते हैं। अहिंसा का चोला पहने हिंसा ही फैलाते हैं। कारगिल का शहीद भी यहाँ घोटाले में दफन हो गया। मेरे सपनों का भारत न जाने कहां खो गया। आजादी के मात्र एक दशक बाद ही हमारे सपनों का भारत भ्रष्टाचार के दलदल में धंसा नजर आने लगा था। भ्रष्टाचार के इस असाध्य रोग के फलस्वरूप नैतिकता का पतन हुआ है तथा सत्यमेव जयते का गला भी घोट दिया गया है। चुनावों में नकली दवाइयों और काले धन का प्रयोग हमारे नैतिक पतन का प्रतिबिंब है। सच ही कहा है, ईमान कम बचा है, नियति तो बहुत स्पष्ट है। ईमान कम बचा है, नियति तो बहुत स्पष्ट है। शिकायत किससे करें जब पूरा तंत्र ही भ्रष्ट है। राष्ट्रमंडल घोटाला, आदर्श घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, मैच फिक्सिंग आदि के खिलाफ जन आक्रोश दिखाई नहीं देता। लोकपाल बिल, नोटबंदी, ई प्रशासन, डिजिटल लेन देन जैसे बड़े बड़े कदम भी विफल सिद्ध हुए हैं। डिजिटल लेन देन बड़ा अवश्य है, परंतु भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। तकनीकी लेन देन सीधे संपर्क को रोकता है, परंतु ऑफलाइन रिश्वतखोरी तो सभी करते हैं। रिजर्व बैंक ने यह खुलासा किया है कि भारत देश के बैंकों से पिछले 5 सालों में 90,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि स्विस
बैंकों में रखे 70 लाख करोड़ रुपए अब तक भारत की जनता को वापस नहीं मिले हैं। कारण स्पष्ट है, ईमानदार अफसर का स्थानांतरण तो क्या, हत्या तक कर दी जाती है। मंजूनाथ और सत्येंद्र दुबे की हत्या कर दी गई, क्यों? क्योंकि उन्होंने ईमानदारी को चुनकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। इसीलिए कोई विरोध नहीं करता। ईमानदारी को तो मूर्खता प्राय माने जाने लगा है। आजकल ईमानदारी से मेहनत कर अपनी जीविका चलाने वाले निरही श्रमजीवी फिर रहे हैं तथा फरेब का व्यापार करने वाले फल फूल रहे हैं। रिश्वत और मिलावट का काला बाजार सर्वत्र दिखाई देता है। ईमानदारी का उपदेश देने से सिद्धि नहीं हो सकेगी। जब तक प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन स्तर बनाए रखने के लिए आवश्यक सुविधाएं सुलभ ना कराई जाए, तब तक ईमानदारी का उपदेश देना, दहेज मिटाओ जैसे आंदोलन से कई समस्याएं दूर हो गई। भाई भतीजावाद और रिश्वतखोरी का डंका हर तरफ बजता है। आजकल सब कानून की त्रुटियों से लाभ उठाकर केवल अपना उल्लू सीधा करते हैं। इन सब तथ्यों से यह तो स्पष्ट है कि ईमानदारी के प्रोत्साहन से भ्रष्टाचार का उन्मूलन नहीं किया जा सकता। यह तो एक विश्व व्यापक सामाजिक कोड है जिसका उपचार असंभव है। अब तो आशा की ज्योति जैसे बुझ चुकी है। हर ओर अंधेरा छाया है, एक काला सूरज दिखता है। हर ओर अंधेरा छाया है, एक काला सूरज दिखता है। मुझे मेरे चारों ओर सिर्फ भ्रष्टाचार ही दिखता है। धन्यवाद। What a wonderful performance. Next, the second last team of this debate, Team 7. Meher will express her views in favor of the topic. We have Radha Yadav in the opposition team to respond to her. Good afternoon everyone present here, respected judges, the jury and the other debaters. I am Meher and today I am going to speak for the motion. Corruption is the manifestation of failure of core values in the society. Indeed, the declaration is true. Corruption, as you have heard innumerable of times, is the blatant abuse of power to reap benefits for one's own self. Have you ever thought what corruption feels like, what it looks like, and that have you ever unknowingly committed corruption? Well, all your questions can be answered once you really perceive about what corruption truly is. Throughout our lives, we have often witnessed corruption in the forms of bribery, extortion, blackmail, embezzlement, which means financial crimes, influence peddling, which means using someone's influence in the government to gain benefits. Favoritism, nepotism, clientelism, which means you exchange of goods and services to gain benefits. In contrast, what are core values? Core values are what makes us, what represents us. Core values are our integrity, beliefs, our priorities. On the other hand, corruption is just like that termite which devours that wooden door which leads to the successful and bright future of the society. We as a society, we need to make our society and fight against the corrupt. Now I'm going to list two of the biggest corruption scandals worldwide. First which comes to my mind is the Lebanon's garbage, stench of corruption. Sometimes dirty money can lead to filthy cities. Since 2015, Lebanon has had a biggest garbage crisis, which has experienced garbages and water contamination and extreme stench. Since 2015, Lebanon has experienced this because the country's main disposal companies to clean had stopped collecting garbages. Next is Maldives, a paradise lost. Maldives is known for tourism, right? So it should come as no surprise that
the country's biggest corruption scandal is also linked with tourism. In 2016, Al Jazeera revealed that approximately 1.4 billion US dollars was laundered through fake tourism investments in the scheme of astounding simplicity. We all know that people in power can be good as well as bad. They are the ones who had devoted their lives for a society. We, as the youth, we need to fight against the corrupt. So, in my conclusion, I would just like to place a question. What would be your counteractions toward corruption? Unfortunately, I may not be able to listen to your answers today, but I believe that your answers will be your contribution towards this society. Thank you. A very good morning to one and all present here. I stand here to speak against the motion. India is a rich country which has managed to keep its people poor. This statement is given by Nani Palkhiwala, a famous public-spirited and distinguished lawyer in Mumbai. Undoubtedly, one of the greatest reasons of poverty in India is corruption that has prevailed in the Indian society from time immemorial in different forms. As my friend said that an eminent reason for corruption is the failure of core values in our society. But we all know that there exist many other reasons which widely contribute to corruption. One of the greatest being the vested interest of our politicians, which is being fulfilled by corrupting the system that has been made for all the individuals of our society, but is being misused by leaders and officials. Another reason has been the connection between the bureaucrats, politicians and criminals. As it is said, wherever there is power, greed and money, there is corruption. Another factor widely contributing to corruption has been an over-centralized administrative center, both at the center and the states. This archaic and outdated administrative system is partly due to the legacy of the colonial rule in our society, but the main reason has been a lack of inadequate leadership in assuring a new administrative system. Corruption is the root cause of poverty, inequality and injustice. In a developing democracy as ours, the scope for corruption is immense because of the tremendous developmental activities of the government. In our modern society, the people who work on right principles are considered to be foolish and are unrecognized. Earlier, bribes were paid for getting wrong things done, but now bribes are for getting right things done on the right time. Although we have enough laws to deal with corruption, there are many areas we ought to take preventive steps so as to assure that the scope of corruption is minimized. One of the important steps could be to decentralize powers, financial as well as administrative, in the favor of local self-government so that the people are not forced to go from pillars to post for the redressal of grievances. Another step could be the right usage of the advanced technology. People are not dependent on the administrative officers who take bribe for every work to be done on time. At last, I would like to conclude by saying, corruption is not the manifestation of the failure of core values in our society, but it is definitely leading to the failure of our core values. There is no greater evil than corruption, and we must all work together to eradicate it. Thank you. It was such a pleasure listening to them. We conclude this debate with Team 8. The debaters are Ayushi and Ayush. Ayushi will present her views in support of the topic and Ayush will respond to her arguments. Thank you. A very good afternoon to all the respected members of the jury and all the guests present here.
Today I am here to speak in favor of the motion. The corruption is the manifestation of failure of the core values in the society. Yes, I truly believe it is a manifestation of failure of core values in the society. I object to the very definition given by my friend. It's absolutely misrepresentation. Yes, I know it is an abuse of power, no doubt. But what really triggers this abuse? If you have a strong moral sense, my question to you, will you ever think of abusing power? If you have a strong moral sense where sharing and caring dominates your action, my question to you, will you ever think of starting someone else alive by brutal show of power? If you are brought up with compassion and affection, will you ever think to hurt someone to satisfy a false ego and enjoy power and wealth? If you are brought up with compassion and affection, will you ever think to hurt someone? It's lack of moral values which corrupts our senses. As it is very rightly said by Mahatma Gandhi that the earth has everything to satisfy and man's needs, not greed. Mark the words, need, not greed. The pursuit of happiness somehow has brought us to a level where we only think about our instant pleasure, whether from a like on a post on social media or running after the material pleasures. As my worthy opponent will talk about the failure of laws, my question is, who framed these laws and who looked into its execution? It's we, it's our value system who guides that decision. Here I would like to remind of our freedom fighters, how they fought for our nation without thinking of their personal gains. As our leaders like Chittaranjan Das, Lala Lajpat Rai and Bhagat Singh are few names to those who gave their everything to get freedom of the country. It was their patriotic feeling who ruled their mind. I think whenever we see anything going wrong, we should raise our voice and fight against it. I know there will be many obstructions, but that is what known as the test of character. It is very famous saying that if character is lost, everything is lost. And a country makes a strong character. And the country has strong character of foundation, and the strong foundation of core values can never fall and fail by the corrupt practices to the vested interest. At the end, I would like to reiterate this the fact that the corruption is nothing but as the manifestation of failures of core values in the society. Thank you, Jai Hind. Transparency and the fight against corruption have to be part of our culture. They have to be thought as a fundamental value. Rightly said by Angel Gurray. A very warm good afternoon to all this. A very warm good afternoon to the respected members of the jury, all the dignitaries, and my dear fellow friends. Today, I stand before you to speak. Corruption, corruption, corruption. It is like a termite which is damaging the root of the nations. There are many causes which lead to corruption. Well, I have a question for our fellow audience. What if I think of becoming the most corrupted person in the world? Is it possible that my assumptions will get true? No, because don't you think factors like low level of democracy, weak civil participation, and low political transparency would also matter? It is not the failure of the core values of the society. Instead, it's the lack of proper functions of the established institutions, flaws in the systems, economic disparities, and the shortcomings of law and order also plays an imperative role. I want to tell firmly to my worthy opponent that in many cases, individuals resort to corruption due to socio-economic pressure, lack of opportunities, or a dysfunctional legal system rather than a moral degradation of values. Dalai Lama said, I quote, lack of transparency results in distrust and a deep sense of insecurity. I unquote. Dear listeners, all these insecurities ultimately lead to pangs of corruption. Not only this, if we minutely observe, there is lack of effective management and organization, which lead to malfunction of the respective department. Another factor is lack of economic stability, which lead to unemployment and unrest in youth. They start looking for shortcuts to earn money, which ultimately lead to corruption. There is lack of good control and vigilance too. Dear opponent, though anti-corruption laws are there, but the tempting and alluring offers make the officers lose their track of honesty.
that corruption is not the failure of the core values. Instead, it's the individual choices one makes. Thank you. Jai Hind. Thank you, Ayush and Ayushi, for sharing your views. अब मैं इस बात प्रतियोगिता के सभी प्रतिभागियों को बधाई देती हूँ जिन्होंने इस मंच पर आकर बहुत ही कुशलता पूर्वक अपने विचार प्रस्तुत किए। किसी भी समस्या या सामाजिक प्रश्न पर लोगों के बीच आम जागरूकता को जन्म देने के लिए नुक्कड़ नाटक एक बेहतरीन माध्यम है। नाट्य प्रस्तुति के द्वारा लोगों का ध्यान आकर्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नुक्कड़ नाटक में वर्तमान समाज, राजनीति, संस्कृति आदि से संबंधित विषय होते हैं। ये विषय हमारे वर्तमान जीवन से संबंधित होते हैं। इनकी भाषा बहुत सरल होती है ताकि प्रत्येक व्यक्ति से समझ सके। इसका उद्देश्य जनता से सीधे संवाद स्थापित करना होता है। अब आपके समक्ष टीम ए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मेरा काम तो हो जाएगा। धीरे बोल, धीरे। कौन सा काम? अरे नेताजी, पति। अच्छा, मेरा तोहफा तो लाया है ना? अरे तोहफे की चिंता मत कीजिए नेताजी, घुमा की रकम देंगे। तोहफा, 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 लाया, 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 तोहफा, 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 तोहफा। कैसा तोहफा? अरे समझे नहीं, वही भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार। हमारा नेता कैसा हो? इसके जैसा कभी ना हो, इसके जैसा कभी ना हो।
चलेगा भ्रष्टाचार। ट्यूबवेल से पानी नहीं है, स्कूल में शिक्षक नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, घरों में बिजली नहीं है। पैसा गया कहाँ? हाँ पैसा गया कहाँ? सुनकर भी लोग अनदेखा करते हैं, देखकर भी लोग अनदेखा करते हैं। दिल से आवाज आती है फिर भी लोग चुप रहते हैं। रोज भ्रष्टाचार देखते हैं, भ्रष्टाचार की बातें सुनते हैं, दिल से आवाज आती है फिर भी चुप है, खामोश है। जब जाओ आज 3 बंद कर चुकी है। रिश्वत देना जुर्म है, जुर्म है, जुर्म है। रिश्वत देना जुर्म है, जुर्म है, जुर्म है। फिर भी रिश्वत का लेन-देन जारी है, भ्रष्टाचार जारी है, भ्रष्टाचार जारी है। भ्रष्टाचार है भ्रष्टाचार, नहीं चलेगा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार है भ्रष्टाचार, नहीं चलेगा अत्याचार। कैसे? आओ हम सब एक हो जाए, भ्रष्टाचार को दूर भगाए। राम भी हमने, रावण भी हमने, किसे अपनाए हमारे बस में। आओ हम सब एक हो जाए, हिंदुस्तान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाए, हिंदुस्तान को भ्रष्टाचार से अच्छा बनाए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसितां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। अद्भुत प्रस्तुति। कहानी क्या कहूँ इस देश के भ्रष्टाचार की, ये तो उत्पत्ति है प्रलोभन के दूषित विचार की। कहानी क्या कहूँ इस भ्रष्टाचार रूपी कुविचार की, जिसमें भावनाएं तर तर होती हैं मानवता रूपी सुविचार की। अब आपके समक्ष टीम बी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भ्रष्टाचार रूपी दीमक को खदेड़ने के लिए अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही है। इसलिए है सब और पहला भ्रष्टाचार। आज लोग भ्रष्ट आचरण की कहानी हम सब की जुबानी, हम सब की जुबानी, हम सब की जुबानी। भ्रष्ट आचरण की कहानी। एक कलाकार कौन अपना पिटारा, दिखा भ्रष्टाचार का पहला नजारा। जी सरकार, मेरे पिटारे में एक बूढ़े लाचार की कहानी। बूढ़े दादाजी पेंशन पर पड़ी है भ्रष्टाचार की मार मारी, मार मारी, मार मारी। अरे दादू, तुम क्यों हो परेशान? 60 साल तक की नौकरी, अब करो पेंशन पर आराम। कैसी पेंशन? ये तो हो गई है नई टेंशन। बाबू को चाहिए घूस नोटी, तभी मिलेगी पेंशन, नहीं तो काटो चक्कर दफ्तर के, काटो चक्कर दफ्तर के, काटो चक्कर दफ्तर के। जी हाँ, सरकारी दफ्तरों कार्यालयों में भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है। एक व्यक्ति को अपने जीवन भर की पूंजी लेने के लिए अफसरों को रिश्वत देनी पड़ती है।
जी सरकार, मेरे पिटारे में युवा जिसने भ्रष्टाचार की मार झेली, अच्छी नौकरी के लिए केवल डिग्री है काफी। जब मैदान में उतरा तो पता चला अभी तो घूस देना है बाकी। पिता की माया खत्म हो गई, कहां से लाऊं रिश्वत। भ्रष्ट राज में जन्म लिया, यही है फूटी किस्मत। आजकल के समय में जहाँ एक व्यक्ति सोचता है पढ़ लिखकर अपना घर चलाएगा, अच्छी नौकरी से अपने माता पिता को गर्व महसूस कराएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि भ्रष्टाचार सबकी उन्नति का अवरोधक बन बैठा है। जी सरकार, मेरे पिटारे से निकल भ्रष्टाचार पहुंच गया दाता के दरबार में। दुखी मत हो बच्चा, दाता सबका सहारा। टाटा भी तो अमीरों की तिजोरी में बसता है, वही वक्त सबसे आगे जिसके पास चढ़ावा भारी। आती जब गरीब की बारी, हो जाती कपाट बंद भारी, फिर खड़ा गरीब इंतजार करता अपने आने की बारी। ऊपर वाले के दर पर सब समान है, लेकिन यह बात इन भ्रष्टाचारी को कौन समझाए जिन्होंने चंद पैसों के लिए भगवान को भी बेच दिया। हर ओर अंधेरा छाया है, एक काला सूरज दिखता है। आलस और लालच से ये अंकुर निकलता है। सच की कोई कीमत नहीं, झूठ की बजाओ देखता है। मन को अपने चारों ओर भ्रष्टाचारी दिखता है। भ्रष्टाचारी दिखता है, भ्रष्टाचारी दिखता है, भ्रष्टाचारी दिखता है, भ्रष्टाचारी दिखता है। एक नजर खोल अपना पिटारा, दिखा भ्रष्टाचार का अगला नजारा। जी सरकार, मेरे पिटारे में एक यात्री की कहानी, जिसको अपना खोया सामान पाने के लिए पड़ी कीमत चुकानी। अजीब सुनती हो, स्टेशन आने वाला है, बच्चों बैग को संभाल लो, कुछ भूल मत जाना। सारी दुनिया घुमाओ लेकिन आराम तो अपने घर आकर ही मिलता है। अभी सुनते हो, मेरा एक बैग नहीं मिल रहा, उसमें मेरे लाखों के गहने और साड़ियां थी। कहीं वो गाड़ी में तो नहीं छूट गया। हे राम, जाओ जाकर देख कर आओ, किसी अच्छे भले मानस ने चाहे जाकर से खाने में जमा करवा दिया हो। ठीक है, जाता हूँ। लगता है किसी का बैग छूट गया है। अरे इसे खोल के रखते हैं, शायद हमारी किस्मत ही बदल जाए। अरे तू सिर्फ बाहर की ही सफाई करेगा या कभी अपने मन की भी करेगा? बेईमान कहेगा। क्या पता इसके अंदर किसी का कीमती सामान हो। मैं जा रहा हूँ इसे थाने में जमा करवाने, तू चल रहा है? जा तू बन जा सत्यवादी। चल ठीक है। नमस्कार साहिब। नमस्कार। साहिब ये बैग मिला है लखनऊ में इनसे। अरे रुक, अरे बम तो नहीं इसमें, कदे मेरे साथ साथ मेरा खाना भी उड़ जाए। पता नहीं साहिब, पराये बैग को खोलना मैंने उचित नहीं समझा। तो ऐसा कर, इसे यहाँ रख दे और अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर वहाँ लिखवा दे। ठीक है साहिब। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज लखनऊ मेल में मेरा बैग छूट गया था, कहीं कोई भला मानस को थाने में तो जमा नहीं करवा गया? हाँ आया तो है एक बैग, लेकिन इसकी क्या गारंटी की जो तुम्हारा ही है? सर उसमें लाखों के गहने और साड़ियाँ थी। चेक करके बताता हूँ। यह सामान तो तुम्हारा ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, तुम तो बैग उठा के चल दिए, हमारे खर्चे पानी का कौन सोचेगा? ओहो। ईमान का पता, नियति तो बहुत स्पष्ट है। शिकायत किससे करें जब पूरा तंत्र ही भ्रष्ट है। भ्रष्टाचार, 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 रोज फैला भ्रष्टाचार, रोज फैला भ्रष्टाचार। साहिब, अगर हमने भी ऐसा ही आपके साथ लालच किया होता तो ये बैग आपके पास नहीं आता। कम से कम आप तो ईमानदारी दिखाइए। आप तो देश के
निर्माण करें सपनों के भारत का, आओ निर्माण करें चरित्र का, ईमान का, स्वाभिमान का, आओ निर्माण करें सपनों के भारत का। अब टीम सी आपके समक्ष भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाने आ रही है। मेहरबान साहिबान कदरदान सारे बड़े और जवान, आप सबको तो पता ही होगा कि भ्रष्टाचार क्या है। आइए आज मैं और आप मिलकर भ्रष्टाचार की जड़ें कहां तक पहुंच रखी है वो जानते हैं। हमारे देश में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि जीते जीते छोड़िए इंसान को मरने के बाद भी भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगी कि हमारे देश में भ्रष्टाचार की जड़ें कहां तक है। आज हम लोग देखते हैं एक अनोखा नाटक जो भ्रष्टाचार पर व्यंग है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु से प्रश्न मैं करूं ना उनके पास उपाय, मनुष्य के भ्रष्टाचार से भगवान भी बच ना पाए, भगवान भी बच ना पाए। लाखों वर्षों से यमराज स्वर्ग नरक का करते हिसाब, कर्म धर्म का ले आधार करते आए रूप अलौट, पर ऐसा कभी हुआ नहीं जीवों की गिनती में कमी। सर्च कर गूगल पर हारे चित्रगुप्त गिनती के मारे। सावधान सब नारी नर, आज की ताजा ये खबर, राज है पधार रहे, जनता सब सावधान रहे। महाराज सब अकाउंट क्लियर है, पर भोला राम का जीव किधर है? 5 दिन पहले तन त्यागा, पर लौटा नहीं है भागा। लाने वाला दूध किधर है? उसकी नहीं कोई खबर है। महाराज दया निधान क्षमा कर दे, प्राणदान का मुझे वर दे। पहली बार हुई है भूल, यमलोक का तोड़ा रूप। भोला राम ही छूट गया, किस्मत मेरा फूट गया। सारे ब्रह्मांड में छान लिया, कहीं ना उसका पता चला। सावधानी में थी ना कोई कसर, फिर भी भोला गया बिसर। महाराज धरती पे हेरा फेरी का नया व्यापार चला है, प्रेम के पार्सल में भी घबरा है। नेता मंत्री नहीं ऐसे, विपक्षी दल करे कितना, अगवा हुआ होगा भोला राम, दुश्मन होंगे उसके अंडरवर्ल्ड और। नारायण नारायण, क्यों धर्मराज खड़े हैं चिंतित, हैप्पीनेस से होकर वंचित। क्या बतलाऊं, नाक में दम है, एक जी गन्ना में कम है। एहसान आपका मानूंगा, खोजोगे तो जानूंगा। नाम पता बताओ उसका, अभी जाता हूँ पृथ्वी पर पक्का। भोला राम रामपुर वासी, झोपड़पट्टी का रहवासी, सरकारी नौकर था बेचारा, रिटायरमेंट के बाद पेंशन का मारा। घर का किराया चुका ना सका, परिवार का बोझ उठा ना सका, इसी गम में मर गया, परिवार जाने उसका कहाँ गया। नारायण नारायण, लो चला मैं अब पृथ्वी लोक, मत मनाओ कोई शोक। अब नारद जी चले पृथ्वी लोक, भोला राम के घर उनकी पत्नी से। आगे दर पर जाओ बाबा, सबसे बड़े हैं घर में खाका।
भिक्षा नहीं चाहिए, भोले राम के बारे बताइए क्या पेंशन बिना वरना लाचारी, मरे भूख से तड़प तड़प कर, पर लटका रहा पेंशन फलक कर। माफ करे माता जी हमको, क्या सेवा दे बोलो तुमको। पर सुनका दिलवा दो पेंशन, कब हो जाए परिवार का टेंशन। नारायण नारायण, लो चला मैं अब उनके ऑफिस, लेके आया पेंशन वापस। अब नारद मुनि चले गवर्नमेंट ऑफिस, घोड़ा राम की पेंशन छुड़वाने। नारायण नारायण, निवेदन घोड़ा राम का आया, क्या फाइल आगे बढ़ पाया। हाँ, आई थी अर्जी यहाँ, बेनुवसन उड़ गई कहाँ। इस टेबल से उस टेबल तक घूम रहे हैं नारद जी, चपरासी ने किया सलाम, बड़े साहब तक सीधे जा, चाय पानी का खर्चा मांगा, बड़े साहब तक उनको टांगा। नारायण नारायण, टेंशन बोले नाथिए जी, परिवार को दिला दो प्लीज पेंशन। ये बतलाएं कौन है आप, सिफारिश करते खाली हाथ। देव मुनि नारद हूँ सर जी, बाकी जैसी आपकी मर्जी। झूठे ढोंगी लगते हो, नारद का स्वांग रचते हो। अर्जी को उड़ने से रोको, कागज पर कुछ वजन तो फेंको। देव मुनि हूँ सर जी, वजन कहाँ से लाऊं, पेपर वेट रुपयों का मैं कैसे बढ़ाऊं। शायद तो ये वीणा मुमकिन है, मेरी बेटी इसकी शौकीन है। रख वीणा अर्जी पर नारद ने भोला की फाइल खुलवाई, फाइल खुलते ही भोला के चिल्लाने की आवाज आई। मुक्ति मिल गई, मुक्ति मिल गई। बदलते रंग के साथ व्यापार करते हैं, हमेशा स्वार्थ के खातिर फरेबी प्यार करते हैं। मसीहा मानते हैं हम जिन्हें हरदम मेरे यारों, कहीं तो लोग अपने साथ भ्रष्टाचार करते हैं, कहीं तो लोग अपने साथ भ्रष्टाचार करते हैं। हे दितंग 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 डम डम दुर्रा, कौन है मदारी यहाँ कौन झमूरा। कुर्सी पे जो बैठा उसे मैं बादशाह समझा, और खुद को समझ बैठा मैं चीड़ का धुर्रा। दितंग 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 डम डम दुर्रा, सेवा का वादा करके वो तो मेवा खा गया, राजा वो खुद बना मुझे प्यादा बना गया। ओ मत भड़क मेरे दिल, क्यों खुद पे ना घुर्रा, तू ही था ना समझ जो उसे दिया तुर्रा। दितंग 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 डम डम दुर्रा, जनता का है ये तंत्र, जनता ही इसका मंत्र, जनता ही राजा प्रजा मदारी और झमूरा, ये देश है स्वतंत्र, ये देश है स्वतंत्र। हो मुझको ही पूरा करना हर काम अधूरा, अब पी के न झूमे कोई सत्ता का धतूरा। दितंग 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 डम डम दुर्रा, कौन है मदारी यहाँ कौन झमूरा। दितंग 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 डम डम दुर्रा, कौन है मदारी यहाँ कौन झमूरा। आओ मिलकर हाथ बढ़ाए, भ्रष्टाचार दूर भगाए। धन्यवाद। Powerful arguments of young debaters and a thought-provoking performance by budding actors have enlightened us on the detrimental impact of corruption. It is high time we raise our voice against corruption. Let us take a pledge today to eradicate corruption from our country. May I now request our Principal Ma'am to administer UN Anti-Corruption Test. I
request all the students to kindly stand for the pledge. सुन 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 ऊपर लेना सकते Thank you, Rizoma. After witnessing such vibrant performances on the stage today, I'm really sure that the nation is in safe hands. So children, we are really proud of each one of you. And as is customary, it's a tradition of the school that on this special day, every year we take this pledge to reiterate, to rededicate ourselves to the service towards nation. We all will repeat together. We hold our beloved homelands, independence, sovereignty, culture, and values to the highest respect. We will make every effort to fulfill I hate corruption. To abstain from all forms of corruption. In both educational and professional life. And determined to refrain from cheating and would strive towards accountability. I will be fully respectful of the law of the land and human rights. I will strive to prevent discrimination and exploitation of human beings. I will endeavor to participate actively in all the anti-corruption initiatives aimed at building a network of committed individuals. I swear with sincerity and commitment that in my whole life I will neither take bribe nor offer any bribe and will keep on sensitizing people about the evils of corruption. Jai Hind! Children have been, talking about and they've been opining, in different manners. And please, all of you are requested to take your seats. They've been talking of, corruption in education. So here, standing before you all, with a lot of humility, I say that you all are sitting in the auditorium of a very unique school, Balwantrai Mehta Vidya Bhavan Anguli Devi Sher Singh Memorial Academy, which runs under the aegis of Service of the People Society, which was founded by C. Not even a single penny has been ever charged from anyone. The admission process in all the schools have started, and we all know. And here I would like to quote an incident, wherein years back, a girl was given admission to this school. The name is Rekha Agarwal, and someone, the canteen wala, someone associated with the canteen had charged 80,000 rupees. When she entered the school the first day, she just discussed with the classmates that I have given 80,000 and you all boast about your school that not even a single penny is charged. And the students said, her classmates said that it is not at all to be believed. And the matter was reported and immediately the action was taken. And this is how the values are there. The motto of the school is to nurture children into good human beings. All our children, all our students are aware and they all are brand ambassadors to fight against corruption. The school has never spent any penny on any PR work also because we know that we produce good human beings and they become the brand ambassadors of the school when they step out of the school and they carry the name of the school with them. And I would like to request, Mr. Vikas over there to just, show
because we were, again with a lot of humility, I say that we have been awarded by the President of India, Srimati Draupadi Murmu, last year on the occasion of World Disability Day with a national award for the Sashakti of disabled children, disabled women. This is a small video. मेमोरियल अकेडमी नई दिल्ली सेवानिवृत्त ग्रुप कैप्टन एस.टी. भाई इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ नियुक्ता गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पीएससी गवर्नमेंट बॉडी संस्थान श्रेणी गवर्नमेंट नेता विजय दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु सर्वश्रेष्ठ संस्था. We were the only school from the capital city, Delhi, to be awarded with the national award last year. And not only this, we have received many awards. Sir recently was awarded by the Chief Minister of Delhi, Shri Arvind Kejriwal ji. He was awarded by Jagran Josh also, and recently he was felicitated with the national award by Avantika Excellence Award. The school in total in last 6 months received 13 awards from different organizations for working in the field of inclusive education, for empowering the children coming from very humble backgrounds. Though we are stationed in GK, one of the most posh areas of Delhi, but the children come from really very humble backgrounds, because the philosophy of the society is to cater to the underprivileged children. So I know without much ado, I won't be taking much of time, and I hand over the mic to my children. Thank you so much, ma'am. I know everyone is eagerly waiting for the prize distribution. Please hold your hearts for some time as the results are being compiled. Our respected members of jury have keenly heard all the participants. May I now request our honorable member of jury, Mr. Razdan, to come and share his thoughts with us. He's not here. He's gone for the room. Malhotra sir कौन है? तो राजन को बुलाओ. Raja sir has gone out for some time, and meanwhile I request Malhotra sir to come and share his views, inspire our children and bless them as well. Sir, please. Heartiest congratulations, such a wonderful day in which the value systems, the integrity, the responsibility, the dependability, the decision, and the discipline, this all has been done in a very organized manner. My congratulations to all. I would only like to say that take care of your thoughts, they will become your words. Take care of your words, they will become your actions. Take care of your actions, they will become your habits. Take care of your habits, they will become your character. And take care of your character, it will become your destiny. And with that powerful word, the destiny is in our hands, because we come with our bhagya, but we make it here with our karmas and with our actions, words, character, with every dimension is okay, then we have done it in a successful manner. So past is a race paper, present is a newspaper, future
is a question paper. What will happen? Nobody knows. Nobody knows. But present, we can make it successfully done. And take care of your studies, otherwise the life will become a tissue paper. Because this is very, very important. And this is in the schools that we get this inspiration, and this remains with us for our lifetimes also. Because the discipline, dedication, devotion, and determination, these are all qualities inculcated by the teachers in the school rooms. And therefore, this dimension, taking care of ourselves, corruption अपने आप रिमूव हो जाती है जिस वक्त लोग डिटर्मिनेशन के साथ चलते हैं कि हम करप्शन को दूर करने के लिए सबसे पहले अपने आप को बनाएंगे। इसीलिए हम जो भी चीज़ कहते हैं पहले अपने दूसरों को जीतने से पहले खुद की जीत करें। तो मैं गीत सुन रहा था, कितना अच्छा था, कितने भावपूर्वक पहुँचते। तो विजडम जो है ये 3 शब्दों में मैं बताता होता हूँ कि 3 W's are very, very important. First is the work, the second is the worship, and the third is the wisdom. These 3 W's are very, very important in life, and this we have to inculcate in ourselves when we are in the classrooms by our teachers. We successfully do it, and that is the determination which will stand in good stead with us throughout our lives. जिन्होंने यहाँ पर इस प्लेज को लिया होता है वही लोग उस प्लेज को लेकर के आगे चलते हैं क्योंकि उन्होंने देखा है उसको और उन्होंने समझा है उसको। इसीलिए मैंने कहा था कि वो हमारी हैबिट्स बन जाती हैं और हम उन हैबिट्स के साथ अपने कैरेक्टर को मजबूत बना लेते हैं और उस कैरेक्टर के साथ हम अपनी डेस्टिनी को इम्प्रूव करते जाते हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है कि इसी प्रकार से बने रहिए और अच्छी तरीके से इन भावनाओं को सुरक्षित करती जाए। मैं कई बार आता हूँ यहाँ पर जब भी ये इस तरीके का प्रोग्राम होता है और मैं ओवरवेल्म्ड हो जाता हूँ देख करके कि कितनी अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर किया है और उनके टीचर्स ने कितनी मुश्किल से उनको ये सब चीज़ें सिखाई होंगी। डायलॉग कितना है, प्रेजेंटेशन कितनी है, उनका मार्क्स में देखता हूँ कि कितनी अच्छी चीज़ें हम डिसिप्लिन के साथ सीख सकते हैं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। Thank you, sir, for words of appreciation. I would like to request our honorable member of jury, Mr. Razdan, to come and share his thoughts with us. My young friends, and elderly inspirers in the audience, I would like to share my experience in about a sentence or two. I got third division in all exams. This is for those who are hopeless. But one thing at parents I had, I was born in Srinagar, but Kashmir में पैदा हुआ, so-called Kashmiri Brahmin society में. तो प्राइम मिनिस्टर तो बनने ही थे. प्राइम मिनिस्टर हमारे कश्मीरी पंडित थे. तो BSc खत्म किया, जो भी थर्ड डिवीजन आया, I was looking for a job in Srinagar. A friend of mine who had failed in intermediate with me, he went for this is something please note it can be very high. He came back from Madras, not America. He said, Vama, my name is Omkar Nath, we used to call Vama. He says, why can't you do degree in engineering? I said, Pagala ho gaya? Degree in engineering is given only to Sheikh Abdullah known people. Whose son was ordinary person, he is a doctor, all his children are some. There is a way out. Anyway, he told me there is a study called AMIE. Then can any student say student? What does AMIE stand for? Anyone?
order. Associate member of the Institute of Engineers. I said, yes, I have heard it. But the result is 7.5%. It is still almost the same. कहता है कि तुम क्यों नहीं कर सकते? तुमको पता है मेरे मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स थे? मुझे 100 में से मेरे पास 30 नंबर आया टेस्ट में। 3 महीने के बाद फाइनल है। डोंट वरी, AMI पर शायद मेरे को 40% 45% मैथमेटिक्स में कैसे आया? We became a minister with God, Kashmir में, मेरा टीचर। To conclude this story, my friend told me, जिनके 7.5% में आते हैं नंबर, उनके पास दिमाग है ना? Why not you have that दिमाग? तुमको भगवान ने कोई इंटीरियर दिमाग दिया? You work hard, you will get it. Then there was a problem of money. We needed 70 rupees per month. This will go against the content of the student today. He said, I will cheat my father. I will tell him that there are only give me 70 rupees per month, give me 80. 10 रुपये में तुम्हें दूँ, ऐसे 70 रुपये कम हो। And then finally, वहाँ जाके I had applied for government loan, उसको सुपारी दे दी, तो मेरी 150 रुपये 60 rupees I said to you, I am not celebrating. 100% of you very bad. Including, please don't lose hope. Dream this time, you will at least be able to cross the gravity of the earth. Evil people will not be able to attract you. The sun will attract you, or the planet will attract you. Go by this. Has anybody got a question on this? Please place the question with my boss. He was my boss in Shillong. He used to be advisor to the toughest Air Marshal of the Indian Air Force. Air Marshal Bichel Singh. He used to invite all principal advisors for lunch in his office for 1 hour. So 45 minutes. So one day one of the guests will be 2 or 3. आलू ढाई नहीं जल्दी I have not called you for lunch. I have called you to do some work, and you take so much आलू to do the work. कैसे करेगा? People dreaded it. He is not protected. That is why, if I was his philosopher, he would be not. You walking like this. Nephew of mine, who was blessed with luck, he got me a laptop, second nephew, from US. Magic! He built a house in America in the last 10 years. He's still in Delhi. You never want to hear it. But I got him to estimate him. I won't give his name. He's lost all value. I won't name him. He used to be my beloved nephew. Year before last, year before brought me a laptop cost 90,000 rupees. Want to buy them, which will consider. So then he invited him to my house. He was a small amount. I always believed there was tax in the country. Not that I was very honest, I was not very honest. I was reasonably corrupt, on record. So this man, I went to be my heart beats when I find a soldier standing in the streets of freedom. And we went near the airport. Talking to that soldier in uniform, he will be marked by IS, not Pakistan, not Kashmir. The message right away, I think. We hesitate to talk to them. And afterwards we come to contact. You have to do a lot of work for our country. I want to congratulate my ex-boss, Inspector Bhatt, is part of the reason why he is retired. And sir, I am not in early 90s. In early 80s, Sharmaji would take pride in saying, I am in 81st of May. Please sign Lok Paul Bill. All MPs signed Lok Paul Bill, but did not sign, did not vote like that.
according to their conscience, they do it. So these are some of the minds that are within me. I want you to be a mind of this country. No more lecture will come. My inspirer, Mr. Malhotra, told you about 3W. I have another 3W. I am not in private and the separate sector. Maybe most of you know what you do 3W law. Lastly, my sponsor, today's presentation was out of the blue. Overall, I have attended about 15, 20 the whole year. And it was like, but multi-millionaire who wanted to become chairman of the at the time of the big problem. Excellent. I also know and the anti-corruption day, Satendra Nirmal was honored most posthumously in India International. There's no audience. भागे चला नहीं सब लोग बताए घूमी गए अगर पब्लिसिटी करते India had a around that. But I have also offered Dharna and the feet of Admiral Tarani. I said, this election will not go your way. I was very same class to say all. And they did. I said, why he has a vote and I have no vote? Everybody is asking. It's an air marshal. Rajasthan have after your vote. You must be reasonably knowledgeable. I think why am I here? So this pragmatic example, the most welcome to ask two questions. First and the last point is life survives on this planet. Who are successful in fight, struggle against survival? So who survives the fittest? Can anyone say who has said this? I am not correct. Drawing your information. Yes, yes. Really. Thank you, madam, for explaining. Not to make a speaking and also not speaking about the sheet. So, of course, the certificate says March 27th. My birthday is celebrated on 31st July. My mother tells me, I don't know when we are small, but we too small. So much. Sir, in conclusion, it would take I would like to present 5,000 rupees for ABC. And I have 90% honest money. 10% there was one more than that. They got a man. And then honestly, he was talking, he told me, he was talking to the boy. Hey, Mangoon, you are Indira Gandhi in the car. And then, सड़क पर मंगोल से उनके साथ ये मंगोल के बारे में बहाना नहीं सुना तो I wish so therefore this 5,000 rupees so you can say why I want to inspire other people to do the same. There was head of the department of Subsidiary Hospital, Mrs. Sajdev. He was speaking ministers. But government के प्रति थे. I was one of the क्या था कि हरा के देखो इसे जानू रणवीर आए चाहे क्लाइंट हो this story has been narrated by Mrs. Sajdev, not to me. So these things are there at home. We must be transparent as well. Honest to God, Ishwar, Shiv, Guru Tegh Bahadur, who offered his life, neck. I believe it 100%. For Kashmiri Pandit. Why did one single Kashmiri Pandit not stand? Sir, I will be one of Panch Pyara. पांच तो आपने दे दिया ना पांच वालों के रखिए नो
Why does it get bigger? हम थी पूजा पाठ के लिए. Now talk related to Tulabla recently. Not this. Some saint in Srinagar told me Razdhan Sahib, not this way. This is real fact. I heard Muslims are offering prayer in Tulabla. Have you heard of Kheer Bhavani in Kashmir? No. Only shrine of Hindus, which was not destroyed by Kabaili in 1947 when we got free, when I was 7 or 8 years old. And the Muslims of that village told the Kabaili means tribal fighters, violent fighters, if you touch this temple, you will be destroyed before you will be freed. That is the Kabaili. And last week, each one of these debaters, and we going to store Dali wala to give them 1,000 rupees prize खाने का, ऐसा नहीं, खाना खाना don't call any guest, but God sake please do. I am inspired by Farooq Abdullah. I made a presentation, I knew small group, 2-3 people. Jalali was very good, he was head of the PTI in Kashmir. So we did this presentation in Delhi, in India, in Texas. My wife is a member of India International. I happen to be her husband, so I am also member. So वहाँ हमने presentation की, ऐसे ही कहा तो our leader was Ian Bilal. He said no leader will come here. Look at the man guts. Farooq बैठा था, Farooq होता, सन वर्ष है, तो उसका वर्ष 2-3 थे. तो then Farooq Abdullah came. I had spoken in my word, I have got a video of that. एक लड़की कितनी से आई थी, big group, 30 people came. First time after terror in 1990. This is a problem of 2008, so 2006. Stage पर आया and announced to one of the girls painting. Farooq came and he was invited to Jalali. Farooq साहब कह रहे हैं तू है खड़ा, no chair. So Farooq साहब को who's the girl who had painted? I thought he's playing tricks. I had been quite frequently in this place. As a Razdhan Sahib, one lady painted over it. Muslim male girl came out. He painted. He gave 10,000 rupees to her. इसका दूध पीना, मक्खन खाना, आगे पेंटिंग लो. That 10,000 rupees was taken by their leader. Boy, 22 years old. Yes. Some food paid to daddy. Give 10,000 rupees. I don't know what happened to 10,000. With this, if you have enjoyed 50% of what I told you, I would be rewarded. I wish to salute in presence of you all to Barika, and he doesn't want publicity like I want. So thank you very much, sir. And thank you. He met me about 15 years ago. Pillars of this organization who along with this gentleman. I forgot. Thank you, sir, for your kind words. I would like to request our chief guest to share his thoughts with us. मेरे सीनियर मिस्टर बहारी, मिस्टर राजदान, मिस्टर मल्होत्रा, स्कूल के प्रिंसिपल और स्टाफ मेंबर और बड़े प्यारे विद्यार्थी हैं। मैं इस स्कूल में पहले भी कई बार आ चुका हूँ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से, और रामनाथ झाजी का मेरे पास कल फोन आया, मैंने मैं जरूर आऊँगा, मेरे को बहुत पसंद है यहाँ का सारा कल्चर बहुत पसंद है। अब जो यहाँ की प्रार्थना थी वो तो मेरे जीवन का आदर्श है, और मैं आपको वास्तविकता बताता हूँ कि अभी जब मेरे बारे में डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही थी तो उसमें पोल रिफॉर्म्स की बात बताई गई थी 1967 से। आप समझिए 1967 से मैं पोल रिफॉर्म्स पे लिख रहा हूँ, और अब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात कही है, ये मैं 1967 से एडवोकेसी कर रहा हूँ, और इसके लिए मैं अभी रामनाथ जी कोविंद जी से भी मिल के आया,
और डॉक्टर सुभाष कश्यप जो मेरे मित्र हैं, जो उसके मेंबर हैं, जो कमेटी बनी है, तो जो प्रार्थना में कहा गया था कि आप कर्म करते रहो, जरूर आपको फल मिलेगा। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जिस तरीके से काम कर रही है और इस स्कूल की कल्चर, बलवंत राय मेहता विद्या भवन की जो कल्चर है, ये दोनों ही ऐसी, दोनों का सामंजस्य अपने आप में एक और एक प्यारा बनाता है। और जो प्रस्तुति थी, इतना बढ़िया डिसिप्लिन था। मैंने एक चीज नोट करी कि 3 मिनट का टाइम था, जितने भी पार्टिसिपेंट थे, ना 3 मिनट से कम ना 3 मिनट से ज्यादा। समय की बड़ी पाबंदी थी और डिबेट बड़ी यूजफुल थी। मैं कई बार सोचता हूँ कि कई बार हम टीवी में प्रोग्राम देखते हैं, मिस यूनिवर्स में डिबेट हो रही है, मिस इंडिया में डिबेट हो रही है, पर ऐसी डिबेट तो वहाँ पे भी नहीं होती कि जैसी यहाँ पे बिल्कुल फ्रूटफुल डिबेट हुई। और एक पार्टिसिपेंट ने तो बल्कि बाद में परमिशन मांग के जो काउंटर किया, मैं उससे बड़ा प्रभावित हुआ और उससे सबसे ज्यादा क्लैपिंग भी। इन सब चीजों को देखते हुए मेरे को ये लगता है कि अभी है आशा की किरण बाकी, सब कुछ गुमा नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक इंसिडेंट बताता हूँ कि कल्चर जो हमारे यहाँ की है, मैं वो आपसे जरूर शेयर करना चाहूँगा कि कैसे हमारे यहाँ बेईमानी होती है। मैं शुरू से लिख रहा था कि होटल्स, और मैं एक ही एग्जाम्पल दूंगा, ऐसे तो बोलते जाऊँ तो कई घंटे तक बोल सकता हूँ। हमारे होटल्स और रेस्टोरेंट्स में सर्विस चार्ज लगाना शुरू कर दिया। अब हम लोग जाते हैं, हम सोचते हैं ये भी कोई टैक्स होगा, आम कंज्यूमर ये सोचता है कोई टैक्स होगा, जबकि वो रेस्टोरेंट और होटल वालों ने एक अलग अपने किस्म का वसूली शुरू कर दी थी और बोले कि ये तो हम अपने स्टाफ वालों को मांगते हैं। भाई तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि तुम कीमत कितनी बढ़ा सकते हो या नहीं बढ़ा सकते, उनकी सैलरी तो बढ़ाओ, हमसे क्यों सर्विस चार्ज मांग रहे हैं। मैंने उसके ऊपर मेरे लेटर्स को एडिटर के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है ही, तो उसके खिलाफ लिखा मैंने। तो उस समय के जो मिनिस्टर थे, उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि कंज्यूमर्स को चाहिए कि रजिस्टर करें सर्विस चार्ज से। अब बताइए, हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, अपने कुछ लेजर एंड प्लेजर के लिए जाते हैं या लड़ने झगड़ने जाते हैं। फिर मैंने काउंटर किया यही वाली बात लिख के, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल दिया ये कर, होटल रेस्टोरेंट वाले उसे कोर्ट में ले गए कि नहीं हमारे को तो ये हक है इस तरीके का लेना। अब मैंने अभी कल ही के ऊपर एक आर्टिकल छपा है, उसके ऊपर मैंने डाला कि हमारे कंज्यूमर एक्ट में अमेंडमेंट करना चाहिए। अगर वो कोर्ट में ले गए तो ये तो बात कभी बचेगी। और इसी तरीके से एक मैं एक्सपीरियंस और शेयर करना चाहूँगा कि हम खुद कितने भ्रष्ट हैं। हमारे यहाँ टिप्स देने की परंपरा है। मेरी भांजी गई, वो जो दुनिया के 5 सबसे ज्यादा ईमानदार देशों में से किसी देश में गई थी, बोली कि मैंने टिप देने की कोशिश करी तो उन्होंने ये देखा कि पता नहीं कौन बेईमान आदमी आते। अब बड़े अफसोस की बात है कि हमारा मुल्क आज भी वही 85वें रैंक पे 85th रैंक के इधर उधर घूम रहा है। और हम इस बात से खुश हो जाते हैं कि हम पाकिस्तान और बांग्लादेश से ज्यादा ऑनेस्ट। ये कोई खुशी की बात है। अरे उन्हें देखो ना, डेनमार्क को, वो कहाँ है और हम कहाँ हैं ऑनेस्टी रैंकिंग में। तो हमारा ध्येय ये होना चाहिए कि हम ऑनेस्टी रैंकिंग में आगे बढ़ें। और ये नहीं होना चाहिए कि हम पाकिस्तान और बांग्लादेश से आते हैं, हमारे को डेनमार्क को अपना आदर्श बनाना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके और बहुत एक डिसिप्लिन डिबेट थी, बड़ी फ्रूटफुल डिबेट थी, नुक्कड़ नाटक भी बड़े अच्छे थे। और मैं रामनाथ जी झा का विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को ये मौका दिया कि मैं यहाँ आप लोगों के बता। धन्यवाद।
you, sir, for your blessings. Well, we have received the results of the various events organized on this occasion. I request our honorable chief guest to come and give away the prizes to the winners. I also request our honorable judges and all the dignitaries to kindly join the prize distribution. In the slogan writing competition, the third prize is backed by Rupashi Bhatt from BMPB second shift. Second prize goes to Jyoti Sharma from Sri Satya Sai Vidya Vihar. The recipient of the first prize is Shreya Gupta from Sri Satya Sai Vidya Vihar. We have also organized an essay writing competition. The third prize in this competition is won by Bhargavi Garg. Bhargavi Garg from Sri Satya Sai Vidya Vihar. The second prize goes to Arnav Sapelia from Balwantara Mehta Vidya Bhavan, Rajasthan. First prize winner is Vanshika Viluri from Sri Satya Sai Vidya Vihar. In on-the-spot drawing competition organized in our school today, third prize is backed by Nikita Singh from Sri Satya Sai Vidya Vihar. Second prize goes to Kinjal Yadav from Khala Public School. The winner of the first prize is Nidali Singh from Ashok Memorial Public School. Now the prizes for the future. The winner of the first prize is Sri Satya Sai Vidya Vihar. Now the prize for the One minute. This side, please. बहुत अच्छी है Now the prize for the anti-corruption debate. The third prize goes to Vaishnavi Singh from Ashok Memorial Public School. Second prize is backed by Shivani Kumari from Balwantara Mehta, Lajpat Nagar. The winner of the first prize is Tanishka Devi from Sri Satya Sai. Tanishka, this side. Next, the team which has been adjudged the best team is Balwantara Mehta Vidya Bhavan, Lajpat Nagar. The participants are Shivangi and Kumbhu. And now the prizes for the best 10 speakers in today's debate. Tanishka Giri from Sri Satya Sai. Shivangi Kumari from Balwantara Lajpat Bhavan.
Lakshmi Singh from Ashok Memorial Public School. Pum Pum from BMVP Lajpat Nagar. Samiksha from BMVP Morning Shift. Ayush from BMVP Second Shift School. Maya from Ashok Memorial School. Krishna from Palka Public School. Sadhya Radha Yadav from Mosta. कार्यक्रम के समापन की ओर कदम बढ़ाते हुए अब मैं हमारे विद्यालय की उप प्रधानाचार्य महोदया स्वास्तिका मैम को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो यहाँ आकर हमारे मुख्य अतिथियों को धन्यवाद दें। A warm afternoon to one and all present here. I'll initiate this vote of thanks with Rabindranath Tagore's quote. One of the child has also mentioned this in a debate. Chitto jethaye bhoy shunno, uchcho jethaye shi. The child said, and I quote again, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by the tireless efforts of man, my father, strike the sleeping India without mercy so that she may awaken into such a heaven. At the conclusion of today's program of UN Anti-Corruption Day, on behalf of the management, principal and staff of the school, I express my heartfelt gratitude to our guest of honor, Subhash Chandra Agarwal sir and Madhu Agarwal madam. Sir, one man, 6,000 RTIs, overwhelming, exemplary. My gratitude to Onkar Razdan sir and Dr. S.K. Malhotra, our judges, honorable judges here. Onkar Razdan said, survival of the fittest. Children, we must learn from what sir said. It is a high competition in the world today and the fittest will survive. True in the sense. My heartfelt gratitude to Ramnath Jha sir, he is a member of TII and a well-wisher of the school, always with us. All the participating schools, the principals of the schools who had made this program a successful by sending their children, the teachers, the students, my heartfelt thanks to each one of you to make this program a successful program. My thanks to all the staff of the school, the technicians, the class 4 staff and the students who made this program a very, very successful program. With the enriching programs conducted today by the students and the experiences shared by our learners guests today, I'm sure we all will do a bit of our effort to make this country corruption-free Bharat. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. अब मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि कृपया राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जय गण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता
अधितरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे सब जय गाथा जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे अंत में मैं कुछ पंक्तियों के द्वारा अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। धन्यवाद। And my thanks to my two anchors of the day today, Ridhima and Anushka. A huge round of applause for them. कौन एंड कर देंगे एक तरह से। अरे हो गया एंड।